joined this class, and um, very happy. Yeah, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं. मैं बोल रही थी कि feeling very confident since I joined this class. हम्म. Looking forward for that 7 o'clock to start and then discuss and listen to you. हम्म. आई गॉट इट. आपने लिखा आपको क्या चाहिए. लिख रही हूँ. हम्म. I know I shared also yesterday that I want to improve my relationship, not relationship, but my uh, fear to meet people, talk to people that I want to change. हम्म. Actually, new people हम्म. whom I don't know. If I go to a seminar or a workshop or any other, apart from people whom I meet daily, I have a fear to talk to them. हम्म. And if you overcome your fear, what will it create for you? More confidence, more happy, uh, Hmm. more happiness. Actually, Hmm. confidence in my career or my work area. Hmm. So bring confidence beforehand. Yeah. Hmm. Perfect. Magically heal your relationship में we have to choose relationship to work on. So my invitation to everybody is let's read the chapter, but be very very clear कि किस relationship में transformation cause करना है. Day 15. Magically heal your relationships. See यहाँ पे photograph है, इसमें crack आ रहा है. So this chapter will actually give you tools and techniques to heal relationship which are not working. If you have a difficult or broken relationship and are suffering from a broken heart or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it with the gratitude. So I want you to be very very clear before starting the chapter कि किस relationship में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. दिस 100% वर्क्स. मैंने बहुत कुछ चेंज किया है इस प्रैक्टिस से एंड इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज. सो gratitude will magically improve any difficult relationship, even the relationship you have with your own self, whether the person is your husband or a wife, brother or your sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. So please give me thumbs up if you have selected which relationship you want to work on. Because I don't want to continue just reading the book if we are not doing the practice. So practice is very 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 crucial and critical. ऐसे चीजें समझने से सिर्फ कुछ नहीं होगा. जो रिटन वर्क करेंगे ना वो बहुत 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 क्रिटिकल है. I don't know how much to say how critical it is. And I am also not getting any breakthrough sharings from all of you. Small small चीजें या clues आपको मिल रहे होंगे यूनिवर्स से अगर आप मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो. और अगर आपको मैजिकल चेंजेस नहीं दिख रहे मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे. When we are faced with a difficult relationship or a challenge situation in a relationship, in almost all cases, we are not in at least bit grateful for other person. I want anybody to share any relationship they are dealing with. Who will like to share? कोई relationship which is not working and they really want to heal that relationship. Please share.
आशीष, नेहा एंड मौरवी। हम यार ऐसा ये एफर्ट इंस्टीट्यूशन वाले को तो नाम ही मैं भूल जाती हूँ बार बार। यस आशीष। मतलब डिफिकल्ट रिलेशनशिप अभी के पॉइंट में ऐसा कोई है नहीं, मतलब आई एम नॉट एबल टू थिंक सो सो। एनी रिलेशनशिप विच यू वांट टू इम्प्रूव और टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब वो अच्छी है पर आइडियल नहीं है, उसमें कुछ ड्रीम क्रिएट करनी है पर लगता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इस रिलेशनशिप में, या कोई चीज की ट्रांसफॉर्मेशन लानी हो। हाउ वी कैन मेक इट बेटर फ्रॉम गुड, मतलब हम्म। इम्प्रूवमेंट कर तो सकते चूज दैट एंड लेट मी नो कौन सी रिलेशनशिप है वो। यू कैन टेक इट विद योर वाइफ। अब तो किस साथ काम कर ही रही हो ना आशीष? हैं। यू सेड ना यू वर्किंग ऑन अ पेरेंटिंग वर्कशॉप, या so you're already working on a relationship with your kids. हाँ, दैट वी कैन आई कैन चूज टू इम्प्रूव बेटर, मतलब हाँ, तो you're working on it right already. या So you can look from there. या विद किड्स आई कैन टेक अप दैट, या हाँ, पर उसमें नहीं, क्यों आप अपने कोलीग्स के साथ ले सकते हो, स्टाफ के साथ ले सकते हो, बहुत लोग हैं दुनिया में। खुद के साथ ले सकते हो, मैंने तो खुद के साथ खुद की रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म की है, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप अ ह्यूमन बीइंग कैन ट्रांसफॉर्म। खुद को किस तरह से देखते हो, खुद को क्या बोलते हो, सेल्फ टॉक दैट आल्सो कैन बी डन, दैट इज आल्सो वेरी गुड। वेरी 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 क्रूशियल। उस कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे तो भाई क्रेजी, आई विल exceptional. चूज दैट ओनली। Okay, perfect. Anybody else? Morvi? Morvi? यार पता नहीं, आज मुझे लग रहा है कि ना तो वीडियो ऑन हो रहा है ना पीपल आर शेयरिंग। Hello. हाँ मौरवी, Yes. you don't want to show me your face? I really like your face. Yeah, I don't know why you hide it. नहीं? Okay, Yes. okay. Have you chosen a relationship for yourself to work on? Yes. And the relationship is with? Is with it's good, but I want it to be more good हाँ, with whom? with my dad, father. Perfect, perfect. So Morvi will be working on her relationship with the dad. Ashish will be doing with himself. Babita still have to figure out, and Neha still have to figure out. Neha, Babita, yes, Yeah, I with myself. with yourself. Yeah, yeah, yes. Perfect, got it. Neha, हाँ, नेहा। यार सर, एफर्ट इंस्टीट्यूट वाले जो भी हैं, आप आपका नाम नहीं मुझे पता, मैं आपको मितेश कैसे कॉल करूं? मितेश हाँ, मितेश मितेश नितेश, यस प्लीज लेट मी नो ना किस रिलेशनशिप पे काम करोगे। फ्रेंड के साथ। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छी, मतलब अच्छी बनती नहीं है सबके साथ, ऐसे मुझे गुस्सा बहुत आता है हम्म। इसलिए। तो कोई एक फ्रेंड चूज करना, कोई एक रिलेशनशिप चूज करो, हम्म, क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक साथ सब करोगे तो कहीं के नहीं हम्म, रहोगे। हम्म, जो परेशान कर रहा है ना सबसे हम्म, ज्यादा, वो रिलेशनशिप चूज कर लो। ओके ओके। तो किसी एक फ्रेंड को पकड़ रहे हो आप? हाँ ये ठीक है, अब अपन शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। वहां से सुनेंगे कि अपन को फ्रेंड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। If you have a difficult or broken relationship, or are suffering from a broken heart, or holding any resentment or blame towards another person or your own self for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is husband, wife, brother,
sister, son, daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. Uh, Morvi, it's you who's working with the dead, right? You're working with, Yes. yeah. So my invitation, अपन ये exercise तो कर ही रहे हैं, but my invitation to you is, अगर आपको अपनी life transform करनी है ना मौरवी, Yeah. तो आने वाले 10 दिन के लिए, minimum 10 days के लिए, रोज 10 gratitude लिखो पापा के लिए। ठीक है। बचपन से Sure. लेके आज तक क्या क्या अच्छा हुआ है, and you feel blessed for it. Sure. Sure. I will. If your father is living, you can say, at least I have a father who is living. Yeah. Start from there. Sure, ma'am. Sure. Thank you Because so much. people, I'm telling you, people, I have seen people um, who have been raped by their father. They have healed Mm. their relationship with their father. Oh, And they do that because your parents are your source of power. So correct. parents के साथ relationship in your system, खुद की body में healing होना, forgiveness करना and align होना, Mm. very very critical for you to have a good life, Morvi. Mm. So I have worked and I continuously work on my relationship with my parents. बीच में जब मेरी शादी हो गई थी ना, जब मेरी शादी हुई हुई थी, तो फर्स्ट Mm. 2-3 years में अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज थी। मतलब मेरे को Mm. मैं इतनी ज्यादा अटैच थी अपने पापा से। एंड आफ्टर शादी 2-3 साल तो मुझे मेरे पापा, पता नहीं क्यों, बहुत इरिटेशन और बहुत गुस्सा और बहुत बहुत अपसेट थी मैं अपने पापा से। Mm. इतना गुस्सा और इरिटेशन आ रहा था मेरे पापा पे। आई जस्ट फेल्ट अबेंडन्ड बाय हिम। आई जस्ट फेल्ट ही लेफ्ट मी। ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड एंड जस्ट ही लेफ्ट मी, यू नो। उनने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। मतलब ऑफ कोर्स आई चोज द पर्सन, बट ही प्रेशराइज्ड मी टू गेट मैरिड। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बोझ पड़ रही हूँ क्या उन पे, you know. And I had Mm. complaints, yeah. He was, no, I don't know, he just had that thing in his head ki shadi karni hai, shadi karni hai, shadi karni hai, shadi karni hai. I felt he didn't really cared for me, and that was my complaint, not the truth but the complaint. And I was not able to feel gratitude for him, just नहीं कर पाई। बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये भी नहीं कि मतलब मैंने कुछ वर्बली उनसे कहा या उनने मुझे वर्बली कहा, बस मेरा मन ही नहीं होता था उनसे बात करने का। मुझे ऐसा लगता था मुझे देखना भी नहीं है। और है भी तो क्या ही बात करूं, मतलब अंदर से सबकॉन्शियसली गुस्सा था। Mm. और बहुत खुंदक आ रही थी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट। आई वाज रियली अपसेट, वेरी वेरी अपसेट। Mm. एंड आई प्रैक्टिस्ड ग्रैटिट्यूड। सिर्फ नोटबुक और पेन पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है मैंने। My way of looking healed. I felt powerful and I could cry, and I could forgive him. So मुझे नहीं पता in what relationship what you're dealing with, but what I'm saying is it's possible to transform the relationship, and the other person doesn't have to change. The other person never changes. And if even if you're working with your own self, it's not about कि मैं है ना अपनी रिलेशनशिप खुद के साथ इम्प्रूव करना चाहता हूँ तो आशीष चेंज हो जाएगा या बबीता चेंज हो जाएगी। It's not about changing yourself or changing the other person. It's about bringing that courage to have love and affinity and have forgiveness in that relationship. Okay, ma'am, can we work on two relationships? Like, maybe Yes, I you can work can, but on start with relate. one. एक Okay. हील करोगे ना और एक में चमत्कार होगे तो आप दूसरी भी अपना आप हील कर लोगे। पर पेपर पेन पे काम करना पड़ेगा। आप रोज 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हो मौरवी, नहीं। हाँ, तो इट वोंट वर्क। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये सब कुछ है, ये आपको पूरी दुनिया जहान दे देगा, आपकी सारी ड्रीम्स
फुलफिल कर देगा, पर आपको देना भी पड़ता है, आहुति देनी पड़ती है ना यज्ञ में। बिना आहुति दिए यज्ञ संपन्न नहीं होता, पता है ना ये चीज। तो आप चाहो मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ जी, पर मैं आहुति नहीं दूंगा और मेरे को तो सब फल मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा काम। एंड इट्स फॉर एवरीबडी। मैंने कल इतनी बार बोला अपनी डिजायर्स लिख लो 10 और उसको विजुलाइज कर लो और आपको वो चीज मिल जाएगी। अब आप साला 100 करोड़ चाहिए आपको, आप विजुलाइज नहीं करना चाहते, आपको 1000 एकड़ का घर चाहिए, आप विजुलाइज नहीं करना चाहते, आप टाइम नहीं देना चाहते और चाहिए सब कुछ लाइफ में, डजंट वर्क। Ask yourself, are you really committed to your own life to make a difference? If you're really committed to create a life for your own self, of course acknowledge कि यार आप क्लास कर रहे हो, I'm very proud of you. Don't blame and criticize कि तू homework नहीं कर रहा. I understand that also. But make sure that you take out time and tell yourself, यार, जैसे for example, Ashish, yeah, I want you to have a good life. I really want you to have a good life. And I want you to experience कि यार क्या possible है. क्या पॉसिबल है लाइफ में यार, लेट्स सी दैट ना। अभी तो कोई बुराई तो है नहीं, पर क्या पॉसिबल है मुझे वो जीना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ ना। अभी लाइफ बुरी नहीं है, ठीक है, चल रही है, सब सही है, पर मुझे कुछ और चाहिए लाइफ में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीनी है मुझे। तो कैन आई डू एफर्ट फॉर दैट? ये मेरी तरफ से खुद को गिफ्ट है कि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूं, बिकॉज आई रियली वांट टू लव यू रिचा। I really want to you to have a extraordinary life. I really want you to have that power in life. You're living extraordinarily. You're creating miracles in life. And then you're inspiring people to do the same. So you need to find out and you have to state what is your purpose of life. And understand purpose of life is created. कोई भगवान लिख के नहीं देता your purpose of life. Created in the sense I want my life to be in a certain way uh, which makes a difference. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. So, अगर कोई चीज आपको दुख दे रही है और आपको पसंद नहीं आ रही और आप एडमेंट हो यार कि मैं ये कैसे छोड़ दूं कॉन्शियसली, तो वो आप ही की लाइफ को बर्बाद करिए और किसी को नहीं। एंड in your control you have only you and yourself. So, whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings for another person? So holding on to an anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Holding on to anger is like grasping a hot coal, Nikhil, with the intent of throwing it at someone else. But you are the one who gets burned. Gautam Buddha. Bad feelings about another person burn your life, but with gratitude, you will eliminate them.
For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and your relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's life are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. बबीता एंड आशीष, आई वांट टू शेयर, जब मैंने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू की थी इन द रिलेशनशिप विद माई सेल्फ, आई हैड लॉट ऑफ कंप्लेन्स विद माई ओन सेल्फ कि मैं ऐसे नहीं करती, मैं वैसे नहीं करती, मैं वैसे नहीं दिखती, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे में वो नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मैंने वो नहीं है. एंड आई सेड कि यार मेरे में हो सकता है कुछ भी नहीं हो, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई गेट इट, पर एटलीस्ट आई एम अ चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. At least I'm the child of a God and I deserve to live. And I'm a gift of life for someone. If not my parents, at least God. भगवान ने तो मुझे बनाई है, मैं भगवान का अंश हूं, तो मैं कैसे खुद को क्रिटिसाइज कर सकती हूँ? एंड देन आई क्रिएटेड कि अब जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, भगवान ने मुझे यही दिया है. बुद्धि भी ऐसी दी है, पर्सनालिटी भी ऐसी दी है, बोली चाली भी ऐसी दी है, लुक्स भी ऐसे ही दिए, हेल्थ भी ऐसी दी है, सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे दिए, रिलेशनशिप भी मेरी जो है वो ही दी है भगवान ने. Even though I'm feeling I'm not happy about them, the way my life is, the way people are, the way this is the gift from God. So it's my duty to love what I am given. It's my duty to love myself. It's my duty to accept my circumstances as they are and as they are not. मैं जिस भी बॉडी में हूँ, जिस भी हेल्थ में हूँ, जिस भी लेवल ऑफ मेंटल आईक्यू आई हैव, जो भी है, जैसा भी है, हो सकता है ज्यादा नहीं है, मे बी. एंड आशीष, अभी तो मुझे लगता है आई एम वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. हाँ, कल ही मैं खुद को बोल रही थी, रिचा तू कितनी इंटेलिजेंट है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. बट आई एम टेलिंग यू, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, फॉर 6-7 years से लेके हो सकता है 15-20 साल तक, मैंने खुद को क्रिटिसाइज किया जब से मेरे पास होश आए हैं कि आई डोंट हैव इनफ ब्रेन्स, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मेरी बुद्धि नहीं चलती, मेरे पास कॉन्शियसनेस नहीं है, मेरे में है ही नहीं यार, मेरे में दुनियादारी नहीं, मेरे में समझ ही नहीं है, आई एम सच अ फूल. बाकी सब तो ठीक है, मैं ठीक कर लूंगी, बुद्धि कैसे ठीक करूंगी वॉज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आई एंटर्ड द प्रैक्टिस वेरी अर्ली, नो. बट देन देर वॉज अ कंप्लेंट देयर, and I had complained for my looks, the way I look. अरे बड़ी मेहनत लगी एक्सेप्ट करने में. भगवान जाने अच्छी दिखती हूँ, अब तो मुझे लगता है अच्छी दिखती हूँ, भगवान जाने क्यों रोती रहती थी. But for the longest time I felt my nose is so huge, my nose is fat, it's on father and not mother, or maybe my mother also doesn't have a nose. I don't have a height, I don't have this, I don't have that. It was never enough intellectually. And I always also had a complaint कि मेरे पास तो आसपास के जो लोग हैं ना, वो कभी अच्छे ही नहीं आते दुनिया में, सब कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को अच्छे लोग नहीं मिलते. भाई ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स थी, पता चला लोग अच्छे नहीं मिलते, मेरी सोच में प्रॉब्लम है, मेरे देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है. फिर उसकी भी कंप्लेंट थी कि साला मेरे को मेरे देखने के नजरिए में प्रॉब्लम है, मुझे लोग ही अच्छे नहीं लगते. आई जस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑनगोइंगली, कंसंट्रेटेडली, कि यार चाहिए यार लाइफ में, मतलब है ना, आई वांट टू बी हैप्पी. दूसरी बॉडी भी मिल जाएगी या सामने वाला कितना ही बहुत ही अच्छा होगा, आई गॉट इट, पर मेरे को तो इसी बॉडी में रहना है ना. अब इसको कितना क्रिटिसाइज करके क्या ही कर लूं.
ओके, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग ब्यूटिफुल, आई गॉट इट। सामने वाले लोग सब बहुत अच्छे हैं, उनके पास दिमाग भी है, उनके पास ब्यूटी भी है, उनके पास दिल भी है, सब कुछ है, मेरे में कुछ भी नहीं है। पर है ना, तो मुझे इसी बॉडी, इसी शरीर, इसी दिमाग के साथ है। Praising the other and invalidating myself will not do anything good. This is it, this is what I have been given, so it's my duty to be happy and take care of it. यही है जो भी है। Even I did the same with my husband. शादी हुई थी शुरू शुरू में, एंड आते हैं यार, अब बहुत बहुत चाहते सही तो कर ली ना शादी, गलत इंसान से तो नहीं कर ली। And I dealt with it for couple of years, 2 3 years, 3 4 years I would say। मेरी शादी को 4.5 5 साल हो जाएंगे अब। लास्ट 1 year से आई एम लाइक ये जो भी है। I am fully happy and satisfied with what I have in life now. But for 4 years I was also dwelling कि यार मैंने सही इंसान से शादी नहीं की, मैंने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन गलत ले लिया, एंड पता नहीं क्या क्या, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वेरी अपसेट। And I have been practicing and working on that relationship तब से, but in terms of gratitude I practiced for last 2.5 3 years। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई यार, आई कांट टेल यू। लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, मेरी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो गई, मेरी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है आज की डेट में मैं सबसे बढ़िया लाइफ जी रही हूँ, सबसे बढ़िया। फ्रॉम कि मुझे जहां पे लगता था कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, फ्रॉम दैट स्टेट तो मुझे आज लगता है कि एवरीबडी, सबसे अच्छी लाइफ है मेरी। दिस दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एक पीस एंड एक्सेप्टेंस आ गई। इंसान चेंज नहीं हुए, सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए, मेरे ग्रैटिट्यूड में ट्रांसफॉर्म होते मेरी लाइफ की क्वालिटी चेंज हो गई, मेरे देखने का तरीका चेंज हो गया। एंड ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट चेंज होता है खुद के ट्रांसफॉर्म होने से, खुद के ग्रैटिट्यूड से। मेरे साथ इन लॉज के साथ इतना बड़ा इशू था, इतना बड़ा इशू था, कांट इवन टेल यू, सो फ्रस्ट्रेटेड। एंड मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, एंड जो नेगेटिव चीजें थी वहां से मैंने फोकस शिफ्ट कर लिया, देखना बंद कर दिया। जो चीजें वर्क नहीं कर रही और मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही, फॉर द सम टाइम आई जस्ट शिफ्टेड माय फोकस एंड आई, मैं एक थॉट इज एन एनर्जी, राइट? इफ आई एम लुकिंग एट समथिंग, मैं, आपके देखने में एनर्जी है। कैसे फील करोगे? जैसे आप मेरे सामने हो, और अगर मैं आपको घूर के देखूंगी ना, अगर आप टर्न अराउंड भी होंगे ना, पीछे मुड़ के देखोगे कोई मुझे देख रहा है क्या, राइट? समझ में आया? किसी को आप घूर के देखोगे ना बहुत दूर, कोई आपसे 50 कदम दूर होगा, पर आप उसको घूरोगे ना 5 मिनट तक, ही विल लुक अराउंड, क्या है, कोई मुझे देख रहा है, कुछ तो है। ही विल सेंस द एनर्जी, और शी विल सेंस द एनर्जी। सो योर लुकिंग एट थिंग्स हैज पावर। आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो उसमें भी एनर्जी है, सामने वाले को फील होता है। जैसे आप में से कुछ लोग मुझे अगर ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे फील हो रहा है कि आप मुझे एनर्जी दे रहे हो। मैं बोल रही हूँ, मेरी बोली में एनर्जी है, उसी तरह से आपके थॉट में एनर्जी है। सो अगर आपको कुछ लग रहा है कि इट इज इम्पैक्टिंग यू मेंटली, शिफ्ट कर लो, उस पर ध्यान मत दो कुछ टाइम के लिए। सो आई प्रैक्टिस्ड इग्नोरेंस फर्स्ट। मैंने जो चीजें मेरी लाइफ में वर्क नहीं कर रही थी उसको मैंने सोचना ही बंद कर दिया, देखना, सुनना, बोलना बंद कर दिया फॉर सम टाइम। एंड आई फोकस्ड ऑन थिंग्स which is powerful, which gives me power, which makes me happy, and which is joyful। मैंने स्टेटमेंट बना लिया था, माई जॉब इज टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई एम माई टॉप प्रायोरिटी। मैंने खुद को इतना खुश कर लिया कि उसके बाद मेरे में शक्ति आ गई उनको फॉरगिव करने की, एक्सेप्ट करने की, प्यार करने की।
जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पाओगे, जब जब तक आप खुद को खुश नहीं रख पाओगे, आप दूसरे को खुशी, प्यार, फॉरगिवनेस नहीं दे सकते. Or if you're suffering from a broken heart or a grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example for that. मेरे कुछ शादी के बाद फ्रेंड्स छूट गए थे लाइफ में, एंड आई रियली लव देम लाइक एनीथिंग. मैं बहुत रोई हूँ उनके छूटने से. 3-4 मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, छूट गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों छूट रहे. मेरे को तो उस वक्त यही लगा था मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह हो रही है. पेरेंट्स छूट गए, फ्रेंड्स छूट गए, घर में भी कुछ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ. आई वाज फीलिंग सुपर डिप्रेस्ड, एंड आई प्रैक्टिस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग, फॉर वॉट एवर टाइम यू वर इन माई लाइफ. 10-20 ग्रेटिट्यूड लिखे मैंने उन लोगों के लिए जो मेरी लाइफ से निकल गए. एंड आई ब्लेस्ड कि now you're going out of my life. I let you go, and I forgive you, and I forgive myself, and I seek for forgiveness if there is something which was hurtful. But I bless you to have a very, very good life, and I'm letting you go. So I let, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को अपने कॉन्शियसनेस से ब्लेसिंग्स के साथ जाने दिया, पेन पेपर पे किया है सारा काम, किसी को कुछ नहीं बोला मैंने. जरूरत पड़ी तो जब मैं पेपर पे सॉर्ट हो गई तो मैंने मैसेज जरूर छोड़ दिया था फॉर in terms of giving blessings that thank you for being in my life for whatever period of time you had, and I really cherished you, and I'm letting you go, and I bless you with a good life ahead. For whatever reason you had to leave my life, and it's just perfect and okay. So it's crazy powerful. Blessings and gratitude. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other. And they had the most beautiful marriage I've ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and then she recalled how wonderful times of happiness she has received through decades with my father. Then she looked for the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found and remembered things she always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. एक्चुअली में मैं सही बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ कह सकती हूँ अब तो, पर उस वक्त तो वो मेरी दुनिया थी. आई फेल्ट आफ्टर मैरिज की मेरी दुनिया तबाह हो गई, मेरे पास कोई होप नहीं बची, कुछ बच्चा ही नहीं अब जीने के लिए टाइप्स. एकदम से पता नहीं, आई वाज इन यू नो आई डोंट नो, and I practice gratitude. Now I love my life. Nothing has changed, but my life has transformed. सेम लोगों के बीच में, सेम circumstances के बीच में, I am flying. People look up to me, भाई ये क्या कर रही है, इसने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ, ये तो चमत्कार है. Actually, I'm telling you, in my sasural, in my extended family, in my mom's family, and my mom's extended family, सबको लगता है रिचा की लाइफ इज मिरेकल. और उनने मेरी लाइफ में इतना मिरेकल देखा कि मेरी पूरी जो फैमिली है, मम्मी पापा बहन भाई, एवरीबडी प्रैक्टिसेस ग्रैटिट्यूड. उनको पता है इसमें पावर है. और मम्मी पापा मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि रिचा तूने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया ग्रैटिट्यूड का. And they have seen my life
ट्रांसफॉर्म 360 डिग्री, मतलब उल्टी पलट गई यार। दे आर शॉक्ड कि मैं क्या सर्कमस्टेंसेस में थी और मैं क्या लाइफ जी रही हूँ। शॉक्ड। उनको तो खुद को ऐसा था कि इसकी लाइफ बर्बाद हो गई अब तो, क्योंकि मैं रोती रहती थी। एंड नाउ दे आर लाइक वाओ। और किसी ने कुछ नहीं किया भाई, दुनिया में कुछ नहीं था। कोविड टाइम में मुझे ग्रेटिट्यूड मिला था, और भाई मुझसे उस वक्त ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, मेरी मेंटल स्टेट नहीं थी। पर जबरदस्ती किया क्योंकि मुझे लगा अब तो खत्म हो गया, और मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। तो जीना तो पड़ेगा क्योंकि दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो बहुत दुआ की, भगवान तू रास्ता दिखा, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। फिर ग्रेटिट्यूड आया था मेरी लाइफ में, एंड आई हैव नेवर लुक्ड बैक। भगवान मुझे छप्पन फाड़ के पैसा दे रहा है, छप्पन फाड़ के अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, छप्पन फाड़ के एजुकेशन दे रहा है। छप इस मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब मेरे को हर चीज अबंडेंस में मिल रही है। ट्रैवल अबंडेंस में मिल रहा है, दोस्त अबंडेंस में मिल रहा है, गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स बोथ, विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। मेरे को तो लगा था मेरे सारे दोस्त छूट गए, तो मेरे पास दोस्त भी नहीं है। और अब कैसे बनेंगे? स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के थिक फ्रेंड्स होते हैं, वैसे वाली फ्रेंडशिप अब मिलना इज वेरी इम्पॉसिबल। इट लुक्ड इम्पॉसिबल टू मी, बट आई हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप आई हैव क्रिएटेड इन लास्ट 6 7 8 months। तो सब कुछ पॉसिबल है, और ग्रेटिट्यूड बहुत 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 पावरफुल है। पेन एंड पेपर को लेके बैठ जाओ, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कुछ जरूरत नहीं है, कितने ही कोर्सेस कर लो, नथिंग कैन ट्रांसफॉर्म एज मच एज इट विल ट्रांसफॉर्म। और कोई भी आप कोर्स करोगे वो भी ग्रेटिट्यूड ही सिखाएंगे आपको, अलग अलग लैंग्वेज में। मैंने स्टोइक फिलोसफी बताई थी ना, ऑब्स्टिकल इज द वे। एक बुक का नाम बताया था ना, रियान हॉलिडे, जिसमें मैंने बताया पीपल हु मेड डिफरेंस इन माई लाइफ। उसमें मैंने बोला था रेयान हॉलिडे की 2 नोटबुक्स है, ईगो इज द एनिमी एंड ऑब्स्टिकल इज द वे। तो ऑब्स्टिकल इज द वे में बुक में यही है कि महात्मा गांधी जी या बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो जेल चले गए थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो अगर वो देवर ब्लॉक्ड एंड देवर केज्ड इन 4x4 का कमरा, दे मेड यूज ऑफ इट। उनके जो हाथ में कंट्रोल था, उन्होंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया। और जैसे 1 2 लीडर्स है जो जिमिंग मतलब हैवी एक्सरसाइजेस करने लग गए 4x4 में। गांधी जी के पास दिमाग था, ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स, फ्रीडम लेटर्स। अगर आप मूवी देखोगे, अफ्रीकन का जो प्रेसिडेंट बना था, फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट बना था, वो जेल में था 10 12 साल। उसने अपनी जेल में रहने के टाइम को इतना अच्छा यूटिलाइज किया, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। देन उस बुक में ये भी था कि एक जने का पूरी जिंदगी भर की मेहनत है ना, उसका घर वो जल गया। वो उस वक्त भी ये देख रहा था कि यार, अपने बेटे को बुलाता है, बोलता है देख बेटा, ये अपना घर जल रहा है, ये नजारा जिंदगी में वापस देखने के लिए नहीं मिलेगा, देख ले खुशी खुशी। इंसान तो शौक हो जाता है, मेरा घर जल गया। He said it's an opportunity for me to grow and learn now. So नो ऑब्स्टिकल, और कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वो 100% 100% अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ को ग्रो देने के लिए। आज आई एम वेरी क्लियर, मैं जिस भी ससुराल में आई हूँ एंड वॉट एवर प्रॉब्लम आई फेस्ड, द हाउएवर माई इन लॉज, मतलब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ट्रीटेड मी, और आई फेल्ट कि यार ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, वो आई 100% ग्रीव एज अ पर्सन। और मुझे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं मिलती अगर मैं इतने बैड इमोशंस में नहीं होती। मेरे में कैपेसिटी नहीं होती प्रैक्टिस करने की, मेरे पास वाई नहीं होता प्रैक्टिस करने के लिए, डिजायर ही नहीं होती उस नरक से बाहर निकलने के लिए। आई एम तो 100% क्लियर। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई पीपल है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, या आपको लग रहा है कि यार ये क्यों ऐसा है, it is 100% for a reason for you to evolve.
With the courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in. मैंने अपना फोकस 100% शिफ्ट कर लिया था, जो चीजें मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एंड आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग. मैंने खुद को बोला, रिचा, बिकॉज मैंने उस वक्त सीखा, थॉट इज एन एनर्जी. अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही और आपकी लाइफ में वो है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रही, उसको थॉट देना बंद कर दो. बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे बोलते हैं थॉट, थॉट की फास्टिंग. तो जब मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही थी, हाउ घर में लड़ाइयाँ होती है, मैंने दिमाग को बोल दिया, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, मैं म्यूजिक सुनूंगी, ग्रेटिट्यूड करूंगी. मैं लेके बैठ जाती थी 2-2 घंटे तक कि मुझे ग्रेटिट्यूड ढूंढना है. मैंने कसम खा ली थी, मैं अपने थॉट्स नहीं दूंगी उस सिचुएशन को विच इज नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ. और जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी घर में, ऐसे क्या मुझे क्या चाहिए रिचा, रिचा मुझे क्या चाहिए, नहीं आता था जवाब. कंटिन्यूस पूछती रहती थी, रिचा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट योर लाइफ टू बी, व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट इन योर लाइफ. देखो तेरी लाइफ में क्या चाहिए. दिमाग बोलता था लाइफ में क्या चाहिए, अभी जो है वो ही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा. लाइफ में क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक सबको खून करना है और खुद का भी खून करना है. इतना गुस्सा था. मैं जेल चल जाऊंगी पर सबको मार के जाऊंगी. And I said, okay, I get you are angry and upset. I get it. And I really love you, Richa. So, what is it that you want? What is it that you want to create? बड़ा सोच रिचा, बड़ा सोच रिचा, बड़ा सोच. Don't give energy to this because I know you can create anything you want in your life. It's just a thought away. Anything. क्या चाहिए? अपन को क्या चाहिए अपन को ही नहीं पता होता. मैं आप लोग से पूछती हूँ, अपनी ड्रीम्स लिखो, अपनी डिजायर्स ढूंढो. हाँ, मुझे तो पता ही नहीं, बस इतना सा हो जाए तो चलेगा, इतना सा मिल जाए मैं खुश हूं. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life. ऐसी चीज जो आपको अंदर से जला रहा है, and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or it's past relationship or the person is no longer in your life. जो भी चीज आपको दर्द दे रही है अभी तक, उसको पकड़ो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो आपके कॉन्शियसनेस में से बाहर जानी चाहिए. आप 100% उस बंदे के बारे में सोचो तो आपको खुशी आनी चाहिए. आपकी वाइब्रेशन ऑरा में वो गम कहीं भी नहीं होना चाहिए. सिट डाउन एंड मेक अ रिटन लिस्ट. सत्संग नहीं है, सत्संग से कुछ नहीं होता. जब तक लिख कर काम नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen to work with or the relationship you want to improve. Think back through the history of relationship and list the great things about the person or great things you have received from that relationship. पता है मैंने क्या ग्रेटिट्यूड लिखा था सबसे पहले खुद का? रिचा यार, लाइफ में लोग आए और गए, तू हमेशा मेरे साथ रही, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट. When I was working on self relationship, at least you were standing there for me. At least you have seen the thick and thin with me. So thank you. Think back through the history of the relationship and list great things about the person or great things you have received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. So my and my sister-in-law relationship was not good, my bhabhi.
नॉट गुड एट ऑल, एंड पूरी फैमिली को पता है कि अब तो ये एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते टाइप्स। मतलब मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, मॉम, डैड, सबको पता था कि अब नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, मतलब हेट्रेड है दोनों के बीच में। I sat down and when I was hating her so much, I sat down and I listed her qualities. And when I was listing her qualities, I was like, "ठीक है, Richa, you are loving her, you're not loving me." And then I said to myself, her qualities doesn't mean that there is something wrong with you, Richa. Thank you for being a bigger person to see positive things in her. If you, even if you are not happy with it, if you, even if you are not liking it, even if you're upset that this is something you wanted and you didn't get from the relationship, the magical practice is not about who is right or who is wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal your relationship, and you don't need the other person in order to heal it. ये फैक्ट है। अगर मैंने जब ये मेरे को ये एक्सरसाइज अपनी रिलेशनशिप जो इतनी खराब हो रखी थी उन पे मैंने 6 7 8 1 साल लगा दिया, तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई उससे। बट आई मेड श्योर दैट आई एम लविंग माई सेल्फ। आई वॉज नॉट सेल्फ क्रिटिकल। मैंने जबरदस्ती खुद से बहुत प्यार किया है, और अब तो मुझे एक्चुअली में प्यार हो गया खुद से। So the magical practice is not about who is right and who is wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even in the difficult ones. भाई मैं आज धन्यवाद देती हूँ मेरी सारी डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को, विद माय भाभी, विद माय भैया, with my in-laws, with my sister-in-law, with my husband. And to bring riches to all your relationship and your life, you have to find the gold. आज मीत के साथ अगर कोई मेरी रिलेशनशिप शुरू से बहुत हंकी डोरी रही होती, तो मे बी आई वुडंट हैव बीन सो हार्ड वर्किंग एंड सो आउट देयर टू मेक अ डिफरेंस, एंड बहुत डिफिकल्ट था। फेथ एंड पेशेंस को नेक्स्ट लेवल खड़ा किया, ग्रो किया, खुद के लिए लड़ी। मैं इतनी बोल्ड नहीं हो पाती, मे बी मैं दूसरी चीजों में फंस जाती। अभी मेरे में ड्राइव है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की नेक्स्ट लेवल। एज यू डिग एंड डिस्कवर अ नगेट ऑफ गोल्ड, write it down and address the person by the name and express your sentence in gratitude. अब जो अच्छी चीजें होती है उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड कोई भी कर लेता है। जहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड नहीं दिख रहा और आप में बहुत नेगेटिव फीलिंग्स है, वहां पे ग्रेटिट्यूड करना बड़ी बात है ना। डैश आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट? Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot and I'm so much wiser today. And I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try too. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए है ना प्रैक्टिस किया था कि मेरे फादर इन लॉ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आई रोट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ, बिकॉज ऑफ हर मेरे पास मेरा पति है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर इन लॉ, बिकॉज ऑफ हर आई हैव her husband as a friend. So I thanked my mother-in-law on the papers. Thank you for giving me your husband being my friend. Thank you for giving your son as a friend. Thank you for giving me this roof and this place to live in. है तो उन लोग का ही ना घर, उनकी कमाई से ही आया होगा। मीत तो लेके पैदा नहीं हुआ था, घर तो मीत मतलब मेरे हस्बैंड के जन्म से पहले है। So I thanked her for the house.
एंड आई थैंक्ड हर कि उसके लिए उन लोग के कितना डिफिकल्ट होगा अपना बेटा शेयर करना मेरे साथ। होता है माओ के लिए डिफिकल्ट, नहीं दे पाती वो अपने बेटों को। Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. अब लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी से भी शादी करती हूँ उसकी माँ होती है, उसकी माँ ने भी तो यही किया होगा। ये सब फालतू की चीज है। If you really want to make a difference, practice gratitude. If you want to play the mental game and put logics into your gratitude, it will not really work. Gratitude is from heart. It's the energy you give. And there is 100% something to be grateful for in you and in others. और नहीं मिल रहा तो खुद को 10 बार रिपीट करो, सामने वाला भी भगवान का बच्चा है। That's how at least I do it for myself. तो कुछ तो अच्छा होगा। उसके पेरेंट्स भी हैं, तो उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप है, तो उस बंदे में कुछ तो अच्छा होगा, वो किसी की तो जान है। Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they are to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore. Because it is your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the magical you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. So it's your choice, it's your life. If you choose a past relationship when you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationship in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. Magic practice number 15, magically heal your relationships. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. प्लीज लिखना है, लिखना है, लिखना है, खुद से प्रॉमिस करो, खुद के लिए लिखना है, खुद की लाइफ बनानी है तो ये लिखना है, ये जिंदगी भर मेरे को प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से करो. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a list of 10 things you are grateful for that person you have chosen. Write it down in the following way. Dash, I'm grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ये ग्रैटिट्यूड जो प्रैक्टिस है, ये एक देखने का नजरिया है, एक एटीट्यूड है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपन डेवलप कर रहे हैं. सो ये बिना लिखे नहीं होगा, तो लिखना तो पड़ेगा. मेरे को आज भी 10 ग्रैटिट्यूड लिखने में आधी घंटा लग जाता है, और मेरे पास कितना ही काम हो, मुझे पता है अगर मुझे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, या तो मैं लाखों रुपए अपने बिजनेस में वेस्ट कर दूंगी,
या मैं अपनी रिलेशनशिप खराब कर लूंगी, या मैं अपनी हेल्थ खराब कर लूंगी, या मैं जिम्स में पैसा दे दूंगी पर मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं डाइटिशियन को पैसा दे दूंगी पर वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंप्लेन्स इतनी भरी हुई है ना। तो मुझे पता है ग्रैटिट्यूड लिखने से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बेटर आई इन्वेस्ट 1 hour हियर एंड सेव months and couple of years there. Are you guys understanding? तो ये मत बोलो मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं हो पा रहा। खुद को बोलो ये ही सब कुछ है। यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू सरेंडर फर्स्ट टू द प्रैक्टिस। Okay, perfect. Thank you so much for being and learning about the science of gratitude. It's very wonderful, and pat yourself and thank yourself for really being in the class. It's not easy to be up in early in the morning, 7 o'clock, and read and listen about gratitude. So thank you so much. Please share if you have any questions. Anybody, any questions before we end the class today? Hello. Hi. Yes, Babita. No, I don't have any questions for Anybody who has any question? Okay, perfect. Please practice. Please start writing.